हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोई अड्डा वंस अगेन। सो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी अबाउट माय ऑर्गेनिक गार्डन, बालकनी गार्डन। सो मैंने अपने बालकनी में ऑर्गेनिक तरह से मैंने कुछ प्लांट्स उगाए हैं, नॉट एग्जैक्टली प्लांट्स, स्पेशली वेजिटेबल प्लांट्स आई कैन से। और उस वीडियो में मैंने काफी जानकारी दी थी। दैट वाज अ स्मॉल टूर टू माय गार्डन, जिसमें मैंने बताया था कि मैं कौन से टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करता हूँ, मैंने कौन सी चीजें उगाना चालू की है अपने बालकनी गार्डन में, और बहुत सारी मैंने उसमें डिटेल शेयर की थी। तो तभी काफी जो प्लांट्स थे मेरे गार्डन में वो काफी स्मॉल थे। मतलब हार्डली 15-20 दिन या एक महीना हुआ था उन प्लांट्स को आके। और आज लाइक आफ्टर दैट वीडियो, आज ऑलमोस्ट आफ्टर 3 to 4 months वो प्लांट्स काफी बड़े हो चुके हैं। मैंने एक्चुअली काफी चीजें हार्वेस्ट करना भी चालू किया है उन प्लांट्स में से। सो फॉर एग्जांपल ब्रिंजल, क्यूकम्बर, लेडी फिंगर एंड कैप्सिकम, सो टोमेटोज, या सो इतने सारे वेजीज मैंने एक्चुअली हार्वेस्ट करना भी चालू कर दिया है। एंड सो मैंने सोचा कि जो अभी करंट स्टेट है मेरे प्लांट्स का, मेरे बालकनी गार्डन में, सो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए मैं अपने सारे प्लांट्स का फिर से। इट्स काइंड ऑफ अ टूर 2, सो जिसमें मैं आपको अपने सारे प्लांट्स बताऊंगा और वो अभी मतलब कितने बड़े हुए हैं, उन पे क्या क्या चीज है, क्या क्या लगी हुई है। और इन बिटवीन द वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी देते जाऊंगा विच विल बी यूजफुल फॉर यू गाइज। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, लाइक ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट गार्डनिंग, राइट, सो इनिशियली लेट्स से मेरा फॉर एग्जांपल कैप्सिकम का पौधा है मेरे पास, वो इतना है। सो उसको इनिशियली एक कैप्सिकम लगा है। नाउ इफ यू थिंक और इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ दैट, सो आप बोलोगे यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम स्पेंड किया, बट आफ्टर ऑल आई एम गेटिंग लेट्स से ओनली 1 कैप्सिकम लेट्स से इन 2 weeks or a month. So if you compare the time and cost which you have invested in that and the output which you are getting, so obviously initially like आप अपने balcony में कर रहे हो, pot में कर रहे हो, you won't be getting the output to a large scale which you generally get in the farm. But what I noticed or what I wanted to tell you guys that कि please don't compare the output what you are getting in terms of monetary benefits. I completely agree कि जो output आपको मिलेगा, it's not it's not something which will give you profit, or it's not something which will definitely आपके इन्वेस्टमेंट जितना आपने उसमें फर्टिलाइजर्स या फिर जो भी पॉट्स खरीदे हैं, जो भी टूल्स खरीदे, गार्डनिंग टूल्स, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके लेवल का आपको आउटपुट शायद मिले, शायद ना भी मिले। बट प्लीज डोंट कंपेयर दैट, बिकॉज द थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, जो आपको पहला वेजी आपका जो पहला हार्वेस्ट होता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट, और आपने अगर वो हार्वेस्ट किया एंड इफ यू एक्चुअली कंज्यूम इट ना, लाइक विथ फॉर एग्जांपल आई कैन शेयर यू माय एक्सपीरियंस। मेरा जो पहला कैप्सिकम था, उसको हार्वेस्ट करने के बाद और उसको खाने के बाद, लाइक वेजिटेबल में, सैलड में, व्हाटएवर, जो खुशी मिलती है ना आपको, दैट इज like non-comparable. You can't compare that happiness with any monetary benefits. So what I wanted to tell you guys is कि उसको monetary benefits के साथ compare मत कीजिए, but try to feel that happiness जो आपको, भले एक छोटा सा ही fruit या एक छोटा ही veggie आपको मिला हो after lot of efforts, but you will definitely see or you will definitely notice that happiness in your mind, in your in your brain, like okay, actually I wanted to say in your soul, but that will be too much. So वो जो happiness आपको मिलेगा ना, that is like uncomparable, and that will give you a true feeling of you are a gardener and it is something that you have grown it and you are consuming it. So मैं वही चाहता हूँ कि आप भी आपने अगर कुछ ये किया हुआ है
गार्डनिंग और जो हैप्पीनेस आपको मिला है आफ्टर योर फर्स्ट हार्वेस्ट एंड व्हेन यू हैव कंज्यूम्ड इट. सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट सेक्शन में. और या सो चलो क्विकली चलते हैं नाउ टू द टूर 2 ऑफ माय बालकनी गार्डन. So this is the cauliflower plant. There is nothing on it yet, but the plant has gone this big, and eventually at this end we will see the cauliflower will be coming out. You can see a little brinjal is already there on this plant, and here is the another one. So lots of flowering has already started on this plant. So this is the matured capsicum plant. As you can see, there are capsicums on this plant and they are ready to harvest. As you can see, there are almost 5 to 6 capsicum on this plant. This is the big tomato plant, and this plant is also now matured, and you can see there are many tomatoes on this plant which are currently getting ripe. So couple of them I have already harvested, and so every week I get almost 4 to 5 tomatoes. So this is also matured corn plant. As you can see, it has grown this big, and yes, we can see the corn are also there on the plant. So as you can see, there are many corns are already there, out of which this one, so this is almost, I can say, 3 to 4 weeks old, this corn, and it is ready to harvest. So I'll be harvesting it soon. You can see a couple of more are there. So yeah, that's the corn plant, and these are some small ladyfinger plants which I have grown. Like, they are, I guess, 3 to 4 weeks old, but nothing on them yet. So this is a turei plant. So I really don't know what it is called in English. I guess rich gourd, but I'm not pretty much sure. So let's call it turei in this video. So now it has grown this big, as you can see, and now I have made a structure with strings, and with this structure we can enable this plant to grow and spread comfortably. These are the garlic plants, small garlic plants, and you can see as the leaves have also started drying out. So these are also ready to harvest. So once I plug this, I'll find the bulk of garlic below the soil. But yeah, separate harvesting video I'll be doing next. This is the cucumber plant. You can see the cucumber are there, and one of the cucumber, you can see here, it has already grown this big, and lot more are there on the plant. So it will also be ready to harvest within couple of days. And this is the curry leaves, so you can harvest it anytime based on the need. And this is the bottle gourd plant. So it has grown to some height, but then I have done a 3G cutting for that plant, and now it is
like this, and yeah, it will be also growing soon, and it will be connected to this arrangement, the strings. These are small chili plants, so they are also now, so initially I have grown them into these small pots, and once they are almost 10 centimeter, 8 to 10 centimeter in height, then we can shift them into the larger pots. And they have also now started growing very fast,